Hello, everyone. Welcome to the live stream discussion of the film The Creator, which is directed by Garth Edwards and which stars John David Washington in the lead role and also Alison Janney from the popular ones, वैसे. So, first of all, thank you so much for joining Dhruv and Abhinandan. And please, first of all, please like, subscribe, share, whatever जो भी करना please करो. For like, let's begin. Okay, so okay, I think we are live. Yes, I think we are actually. And मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था, लेकिन yes. So yes, let's start with Dhruv. Dhruv is kind of my बोलते ना कि ये द तो वर्ल्ड इंटरनेशनल सिनेमा सिनेमा नहीं है सर। इंटरनेशनल सिनेमा नहीं है, हाँ ये, लेकिन फिर भी एट द एंड कुछ तो सिनेमा है, राइट? हाँ ये और क्या। लाइक मैं बोलते ना कि साइंस फिक्शन विच इज वेरी नॉट वेरी मच नोन ऐसा, सो वाला यस साइंस ओके फिक्शन है, फेयर ऐसे इनफ इसलिए फेयर इनफ आई मीन एग्जैक्टली आई सो थॉट बजट इज सो मच दैट यू वोंट कॉल मी फॉर द फिल्म। नहीं नहीं, बजट तो मुझे नहीं पता इसका ज्यादा था, मुझे आई डोंट नो 80 लाइक, बट 80 ऑब्वियसली million I विल think डेफिनेटली 80 टॉक 90 अबाउट दैट million एज वेल, yeah What is the बट यस budget? कितना बजट 80 था? 90 million I think काफी ज्यादा है. That's still yeah decent VFX, yeah obviously. yeah एग्जैक्टली. सो यस, अभिनंदन हु मतलब वो मुझे ज्यादातर ऐसे मूवी सजेस्ट करते थे, यार इस पे करते. बोला यार मैं देखी नहीं है, मैंने देखी नहीं है. मैं बोला यार ओके चलो लेट्स सी, अभी कोई एक फाइनली एक मूवी आई जिसपे हम लोग म्यूचुअली अग्री कर सकते हैं. So let's as in अच्छी like लगने के welcome लिए guys, that way welcome guys for to this discussion. Let's start with Dhruv. ध्रुव गोयल yes जी, कैसी लगी ये फिल्म, बोलिए. surprisingly good, which I was not expecting. Just because I think आजकल थोड़ा एक्सपेक्टेशन और जो भी आई थिंक जो भी बड़ी ब्लॉकबस्टर्स आई हैं रिसेंटली, मैं उनके साथ मुझे वो उतनी नहीं अच्छी लगी हैं. और ये पॉपुलर वाली भी बोल रहा हूँ, जो आई थिंक आप सबको टॉप गन बहुत अच्छी लगती है, मुझे नहीं अच्छी लगी उतनी. मैवरिक दैट इज I think everyone, I think I can recall that's the big last blockbuster that I think unanimously सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी. I liked Rogue Nation नहीं, क्या नाम है, मिशन स्टार इम्पॉसिबल वॉर स्टोरी. 7 का Yeah, Oh, Star Wars अच्छा Rogue अच्छा, ओके. Nation. मिशन इम्पॉसिबल Okay, Mission रोग Impossible नेशन. Rogue डेड Nation. रेकनिंग और whatever it was, डेड part रेकनिंग. 1 Yes. Dead that वो Reckoning, मुझे yes. अच्छी लगी थी. हाँ, Yeah, बट वो लोगों को नहीं अच्छी लगी, तो मैंने बोला कि लाइक अच्छी yeah. नहीं लगी, ऐसे लाइक कंपैरेटिवली नहीं अच्छी लगी मिशन इम्पॉसिबल मूवी से. सो आई हैड हर्ड, थोड़ा मैंने सुना था कि इसकी ये वो स्टाइल ओवर सब्सटेंस, विच आई डोंट नो कितना उसमें वो क्रिटिसिज्म भी कहलाता है. स्टाइल ओवर सब्सटेंस, आई डोंट थिंक वो क्रिटिसिज्म है इन जनरल लाइक फॉर स्टफ. बट मैंने सुना था कि इसमें बेसिकली मेकिंग बहुत अच्छी है, बट एक्चुअली पिक्चर नहीं अच्छी है, स्टोरी नहीं अच्छी है. ये सब मैंने सुना था व्हेन इट रिलीज्ड, एंड मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था कि ये रिलीज होएगी कब. लाइक जब आई थी तब मुझे लगा कि ये इतनी बड़ी पिक्चर एकदम से कहाँ से आ गई, व्हेन इट रिलीज इन सिनेमाज at least, because I don't think इसने पैसे उतने बनाए from whatever I know. And it is sad because ये ओरिजिनल साइंस फिक्शन आप बोल सकते हैं ऐसे हैं. अब वो ओरिजिनल टैग लगाना थोड़ा लोडेड है आई थिंक, बिकॉज इसमें ओरिजिनलिटी तो है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड बिल्डिंग तो है, बट जितनी साई-फाई पिक्चर से ये इंस्पायर्ड है वो कुछ ज्यादा ही है. लाइक और लाइक इवन वो स्टोरी. डायरेक्टर गेर्थ एडवर्ड्स वो खुद एक्सेप्ट भी करते हैं कि मैंने बड़े होके जो जो साइंस फिक्शन मूवीज देखी है, इट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट, और उससे ही काफी लाइक मैं लाइक प्राण सॉरी इंस्पायर्ड हुआ, सॉरी. यस लेकिन यस वो सो उसी की वजह से दिस इज द लाइक ऑफ द फ्रूट ऑफ दैट, इतना इतने सालों का एक्सपीरियंस, हाँ इतने सालों का व्यूइंग. सो आई थिंक हाँ, पर वो आई थिंक फ्रूट खुद का भी होना चाहिए आई थिंक मेरे लिए. बट वो एक्चुअली बहुत ज्यादा, इट्स लाइक इंटरेस्टिंग आपने फ्रूट बोला है, तो फ्रूट प्लेटर जो होता है ना, काइंड ऑफ वैसा है एक्चुअली ऑफ द प्लॉट. मैं बोल रहा हूँ कि प्लॉट ये उतनी बड़ी क्रिटिसिज्म नहीं है, अगेन बिकॉज आई थिंक ओरिजिनलिटी का कॉन्सेप्ट ओनली थोड़ा जेडेड है. आई डोंट थिंक ओरिजिनलिटी कहीं पे भी आपको ऐसे ज्यादा मिलेगी. सो इन इन द फैक्ट कि ये आईपी नहीं है लाइक किसी चीज का, या फिर यू नो मार्केटिंग टूल्स से सॉर्ट ऑफ इसको इंजीनियर नहीं किया हुआ, ये खुद का पैशन प्रोजेक्ट समझ लीजिए है. आई थिंक वो इटसेल्फ ऑफ कोर्स बड़ी बात है, बट
आई वाज सरप्राइज्ड कि मुझे कितनी ये मोमेंट टू मोमेंट भी अच्छी लगी. मुझे मैं एक्सपैंड करूंगा बाद में कि क्या नहीं अच्छा लगा वैसे, बट मोमेंट टू मोमेंट आई थॉट एक्शन बहुत अच्छा था. आई थॉट दिखने में बहुत अच्छी थी पिक्चर कंसिस्टेंटली. आई हैव नॉट फेल्ट अ फिल्म फील दिस रियल, एंड आई मीन एज अ कॉम्प्लीमेंट की जब भी चीजें होती थी. एक्सप्लोजन आई थिंक इसमें 5-6 बहुत सारे एक्सप्लोजन होते हैं एक्चुअली मूवी में, एंड हर एक्सप्लोजन में जो फील होता है एक्सप्लोजन का वो इम्पैक्टफुल था. वो मैंने घर पे देखी थी, लैपटॉप पे देखी थी, तो सो वो सारे फैक्टर्स भी हैं, बट आई थॉट इमर्सिव थी इन दैट वे. एंड हाँ, एंड देन वील डिस्कस मोर अबाउट स्पेसिफिक्स व्हेन यू गाइस आप जब श्योर. आप लोग अभिनंदन, बोलोगे. हाँ. नेक्स्ट यू कैसी लगी? Yeah, honestly, thing is like when the trailer also came out, there were pretty mixed reactions because John David Washington. ओके, फ्रीज हो गया. जॉन डेविड वॉशिंगटन पे. वाशिंगटन पे ही फ्रीज हो गया. ओके, यस. यस. अभिनंदन फ्रीज हो गया अभी भी. हाँ हाँ, आप आई बोल थिंक, दो. हाँ, यस, आई थिंक. सो यस, मैंने ये फिल्म के बारे में ज़्यादा नहीं सुना था. जस्ट आई थिंक सितंबर में जब ही सुना था, और या फिर सितंबर एंड अक्टूबर स्टार्टिंग में जब ये सिनेमाज को हिट करने ही वाले थे, या कब कर गई थी. इट वाज इन सिनेमास फॉर क्वाइट सम टाइम वैसे. सो तो आई वाज एक्साइटेड टू वॉच समथिंग साइंस फिक्शन वैसे, बट इतना नहीं, क्योंकि अवतार कैसा था, एंड अवतार एंड दिस वन केम फ्रॉम द सेम स्टूडियोज. अवतार Okay. ने कितने महीनों से, आई थिंक महीनों तो यार कम बात है, सालों से, सो मतलब सालों से इतने लाइक हाइप बना के रखा था वैसे. सो ये JDW क्या है ये आप लोग का, पता नहीं मुझे. JDW जॉन डेविड वॉशिंगटन है सर. Yes. ये संजीत बहुत बड़े फैन है जॉन डेविड वॉशिंगटन के, तो ये आई मीन मैं आयरॉनिकली बोल रहा हूँ, इनको नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी. तो कटाक्ष में बट बोल है, रहे हैं. ओके. पहली बार एक्चुअली मैं उनसे थोड़ा अग्री करता हूँ, बट बोलूंगा उसके बारे में बाद में. नो, बट बट हाँ. एक्चुअली जब ही अक्टूबर में, लाइक आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर इतने बड़े बजट का, जैसे तूने मेंशन किया था, $70-80 मिलियन का फिल्म है, सो एटलीस्ट मार्केटिंग में भी तुम इतना लाइक थोड़ा पैसा और खर्च करते तो अवतार जितना कर सकते थे, लाइक कि अभी सर तुम्हारा उसकी इतना तो हाइप वर्ल्ड ही कुछ बिल्डिंग ज्यादा. का. आपको अच्छी लगी थी अवतार नई वाली? अवतार मैंने देखी नहीं है, नई बच वाली, गए. मैं सच बोलूंगा वैसे. सो यस, अभिनंदन इज बैक. अभिनंदन, एक्चुअली मैं Sorry, बोल guys, रहा I था. had to change my It's position a it's little. completely okay. It's completely okay. Yes. I So मैं बोल रहा था कि ये this film came from the same studios, from like which okay. studios made Avatar 2. अवतार. और Avatar 2 के जितना hype इन लोग ने इस फिल्म के लिए क्रिएट नहीं किया था, शायद उसी की वजह से ये ज्यादा लोग तक फैला भी नहीं था जब ये थिएटर में रिलीज हुआ था. इसी की वजह से मैंने खुद ने भी ये फिल्म नहीं देखा, बिकॉज ये दिस फिल्म काइंड ऑफ, वो बोलते हैं ना, आईमैक्स जैसा फील दिलाता है कि लाइक यू शुड वॉच इट. बिकॉज मैं जब भी अपने टीवी पे भी देख रहा था, तो तभी वो आईमैक्स जैसा नहीं, बट वो जो काफी बिग 70 मिलीमीटर जैसा फीलिंग जैसा रहता है, लाइक क्वाइट वो पैनाविजन कैमरास जैसे रहते हैं, लाइक ओल्ड स्कूल थोड़ा जो. ओल्ड स्कूल. एग्जैक्टली, मैं थोड़ा लॉस्ट इन वर्ड्स हो रहा था, लेकिन ओल्ड स्कूल जैसा जो फ्रेम रेट रहता है, सही, जो सिनेमा रेशियो रहता है, एस्पेक्ट वैसा रेशियो या जो भी होता है. ये हाँ हाँ. एग्जैक्ट एस्पेक्ट रेशियो सब था, तो वैसा लग रहा था. सो और वो सब जो हम बोलते हैं ना 50s की ग्रैंड मूवीज जैसी रहती है, बेन हर जैसी रहती है, तो उसका एस्पेक्ट रेशियो का याद दिलाता है वैसे. सो ये भी कमिंग बैक टू दिस, बट वही था कि ये आईमैक्स जैसा रिलीज अच्छा होता, आईमैक्स में भी हुआ रहेगा, आई लेकिन थिंक हुई थी एक हफ्ते टाइप के लिए हुई थी. एंड इतना आई इतना कब थी? रीच नहीं था सर. लाइक यहाँ पे भी इतना रीच नहीं था, एज आई सेड, कि लोग देखने जाए और लोग बात करे एज कम्पेयर टू अवतार, और एज कम्पेयर टू अगर साइंस फिक्शन में ही अगर कुछ फिल्म्स देखते, तो जब भी या क्रिस्टोफर नोलन की ऐसे कुछ फिल्म आती है, वो ऑब्वियसली उनका बजट ही अलग है रहता है, नहीं, लेकिन 20 मिलियन ही ज्यादा है ना.
Exactly, but marketing budget भी sir, marketing Marketing budget budget, भी yes. exactly, so इसलिए so yes it was there in IMAX संजीत. Yes, आपने शायद से बर्लिन में I देखी think होगी, इसने लेकिन देखी यहाँ ही पे होगी इतना IMAX में, जहाँ तक मुझे correct, लगता है. इसलिए so संजीत is Pixel Baba Sanjeet is one of the co-founder of Queen is Dead podcast with Dhruv. नहीं, I am not the founder, I am just the host, sir. Founder मैं नहीं Okay. हूँ, please. इतना Okay. इतना elevation मत Founder लीजिए is उसके. Sanjeet and the host is Dhruv. Dhruv, Yes. please subscribe to Queen is Dead podcast. Yes, coming back to this, मतलब मैंने जब भी इतना सुना नहीं था, जब भी सुना तो मैं बोला कि चलो जब भी आता है इसमें जब भी डिजिटल में तो तभी देखते हैं. और मैंने जब भी डिजिटल में आई थी, आई वाज क्वाइट एक्साइटेड टू वॉच समथिंग ओरिजिनल, बिकॉज इसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था कि इट्स काइंड ऑफ अ रीमेक ऑफ सम ये हाँ ये किसी फिल्म का रीमेक है. सो आई वाज क्वाइट एक्साइटेड कि चलो कोई ओरिजिनल काइंड ऑफ अ फिल्म देखते हैं एज कंपेयर टू अ मार्वल समथिंग लाइक दैट. सो मैंने देखी और द वर्ल्ड बिल्डिंग क्वाइट शॉक्ड मी. जैसे लाइक आप लोग को भी प्रोबेबली लगा रहेगा, ध्रुव को लगा, लाइक द वर्ल्ड बिल्डिंग काइंड ऑफ शॉक्ड मी. बट हाँ, एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू वो जो रहता है, मुझे एक टाइम पे ऐसा लगा कि इट्स काइंड ऑफ लाइक अवतार 1, लेकिन ओके लाइक वो थोड़ा वो भी फ्यूचरिस्टिक में सेट है. वो थोड़ा ज्यादा ही फ्यूचरिस्टिक में था, ये थोड़ा कम था. बट फिर भी वो वर्ल्ड बिल्डिंग इतना अच्छा था और इतना ग्रिपिंग था, उसी की वजह से दिस फिल्म काइंड ऑफ एंगेज्ड मी टिल द वेरी एंड. और यही इनफैक्ट मेरा फर्स्ट इनिशियल रिएक्शन रहा था. जस्ट ऑब्वियसली जैसे ध्रुव ने बोला, आगे जाके इस फिल्म के बारे में जो अगर लाइक उनको भी लाइक तुझे भी जो फ्लॉज लगे उसके बारे में बात करेगा. ऑब्वियसली मुझे भी थोड़े फ्लॉज जैसे मुझे ऐसे पर्सनली लगे तो उसके बारे में मैं बात करूंगा. बट यस, नेक्स्ट टू अभिनंदन, जॉन डेविड वॉशिंगटन पे आप फ्रीज हो गए थे. बट यस, गो ऑन. क्या कैसा लगा था ये? Basically, it's a kind of a slow cinema, to be very honest. Because when it starts in the very usual Hollywood style with a documentary, with all the montages that happens, and exactly like what goes wrong. एक तरफ से मुझे ऐसा भी लगा ये थोड़ा सा प्रोपागेंडा सिनेमा भी है, because in terms of when you're showing any cinematic masterpiece on an artificial intelligence, इससे पहले भी कितने सारे मूवीज आ चुके हैं. इनफैक्ट मुझे सबसे पहले जो मूवी मेरे को याद आ रहा है, दैट इज माइनॉरिटी रिपोर्ट, जो टॉम क्रूज का ही था, which was kind of like futuristic set TV, जहाँ पे आप फ्यूचर देख सकते हैं. एक क्राइम होता है, आप पहले वहां पे पहुंच जाते हो and you prevent the crime. It's kind of like a butterfly effect kind of a thing. Secondly, then again there is iRobot, जिसमें Will Smith भी था, and then therefore there's a kind of a murder mystery that happens. Similarly, बहुत सारे इंस्पिरेशंस में जब इस मूवी को देखते हो ऐसा ही होता है. एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन के बीच का जो एक बैटल है, it's still like some of the human species don't agree with it, and there's a certain population that supports it, and it also like opens up on John David Washington's marriage. ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता because it's kind of a spoiler. No, it's Because okay. It's okay. I think it's a spoiler-filled discussion. Yes. Like he's with a certain woman, and the woman is actually has been brought up by those what do you say, stimulants, जिसको बोलते हैं. Simulants, I think. Stimulants या simulants? Simulants, I think. Yeah. Films. जिसको बोलते हैं, and these are those artificial intelligence human androids की तरह उसको create करते हैं, and therefore जहाँ से वो एक conflict शुरू हो जाता है, basically the woman is murdered, and therefore John David Washington is like he becomes a kind of a detached person. उसके बाद से it's a very similar kind of an inspiration where a guy, in order to find in order to retrace his roots, exactly who he supports in this kind of it becomes a kind of a journey for them, because again he's sent on a similar mission in the second thing. उसके बाद से वो वेपन को लोकेट करने आता है, उसमें पता चलता है वो वेपन नहीं है, एक बच्ची है, and she is kind of, and she has been developed with certain kind of skills, and the skills also talks about manipulating technology, और वो हर टेक्नोलॉजी को मतलब ऑन ऑफ कर सकती है. लाइक शी हैज बहुत कन्वीनियंट, बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है. आई मीन आई नो कि ये साइंस फिक्शन में ट्रोप हो सकता है, बट जो उसकी पावर है एसेंशियली आपको प्लॉट पॉइंट में कहीं पे भी कोई भी इशू हो ना, वो सॉल्व हो जाएगा उस प्लॉट पॉइंट से, क्योंकि उसकी वो टेक्नोलॉजी एसेंशियली. मुझे जो इसका सबसे बढ़िया चीज लगा है, इट्स बेसिकली द डिजाइनिंग. आई मीन I'm not talking about the production design. Of course, it's got scale and scope.
I'm talking about like how the androids and the anatomy of the people have been designed in the entire film. I mean, basically, a certain population here, basically, they are like half cyborgs, half humans. And the designing is really good. Even जैसे when we so basically there's a certain population that's driven by a local police force. वो local police force भी एक androids होते हैं and basically तो उनके designing भी बहुत अच्छी है. And in terms of that also basically जैसे humans अपना look alike अपना skin या फिर अपना कुछ दे देते हैं जिसके वजह से they are also creating those look alike kind of human cyborg kind of a thing which is very interesting. And there's actually a particular set piece too which actually talks about like how this interesting dichotomy between like a human and a cyborg is kind of like very interesting because ऐसा हो जाता है कि basically there's a double role and then it becomes a triple role. फिर उसमें भी फिर पता चलता है कि it's something to do with the subconscious thing and stuff like that which becomes even more weirder and weirder. And I think basically अगर मैं ऐसे प्रोडक्शन डिजाइन की बात करूं या फिर अगर स्पेसिफिकली कैरेक्टर डिजाइनिंग की बात करूं तो मैं ऐसे एलियंस में देखा था लास्ट रिडली स्कॉट की just like how they design the aliens and the First ships one. and even First. yeah. First. Okay. Second वाली James Cameron की Yeah, है. no, absolutely. So, उसके बाद तो Okay. यार part 2, part 3 were completely different IPs. Even they Yes. belong to the same IPs, it felt like they were very different disjointed timelines kind of a thing. Mhm. But again, to keep my conversation in parallel with both of you guys, I think this was very exciting because first of all, अभी हर blockbuster movies जो निकलती है, these are all IPs and franchisees and stuff like that. And we don't get to see anything, like very independent but very creative. And at the same time, when you're watching a movie like this, it's a very indie movie kind of a thing. But then also with the way it has been presented, so stylistic, so visually appealing that you get sucked in. And it will take some time to grow on you, to be honest. It will really take some time to grow on you because as you move along, you get to understand the story is not about only John David Washington. It's about these devices and the spaceships and everything, and how these guys are kind of, like serving as a protagonist in the film. It's kind of like that. कि गैरेथ एडवर्ड्स ने ये मूवी बनाई है उससे पहले भी कुछ एक मूवी बनाया था मॉन्स्टर्स करके which was Monster again उनकी I think small scale like proper small scale. indie yeah It still felt like a large scale because big I think yes he has yes that kind of, yeah, because I I think think उसी these kind of things are always kind of challenging, in terms of how you present a content. और ऐसे मूवी लिखने के लिए भी आपको विजुअली आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा. I think there's one of those beautiful scenes जहाँ पे it's nothing to do with any spaceship. It's to do with a dog in the film, and yes then they throw the bomb, and the dog actually takes the bomb and he takes it outside, and therefore it destroys the human police force. I mean, not the yes human police force, the simulant robotic. one वो I think robot I हाँ think that's very funny, and it really adds a nice touch to the film. I think moments like these, like set pieces, like एक set piece से दूसरे set piece में जाना, and to connect the veins and to make the blood flow through the entire film, I think this movie does a really smart job with that. Secondly, I definitely agree this movie is made for an IMAX viewing. Honestly, I feel that way because I think यहाँ पे aspect ratios का भी बहुत खेल है इस film में. But what I loved about the film is basically the background score, the OST. It's really interesting because obviously Hans over Zimmer का here है सर. हाँ इसका कैरेक्टर्स जो है वो थोड़े हिंदी में भी बात करते हैं because there's a certain Indian population too which actually makes it really really interesting. और जो इसका मेन जो है क्रिएटर it's called निर्माता, it's not called yes creator. So how these yeah guys use accent to call निर्माता ऐसे करके accent yeah करके निकालते हैं. It makes it really interesting. And then obviously there's a twist to it, to the creator, which even John David Washington didn't expect. And then obviously his journey began. So I think there are a lot of many moments to enjoy. There's a lot of moments to adapt, and definitely full marks for its presentation style. It's really unique. I mean, you have this kind of content has been made over and over again for decades. Like you can take Chappie, you can take District 9, you can even take up that Mark Wahlberg film which I'm forgetting, Elysium or something like that.
Elysium जिसमें is it's Matt Damon, I think, if I'm not wrong. yeah. So basically, हाँ those were actually Neil Blomkamp वो movies. हाँ सब नील ब्लोमकैम की है, Blomkamp I के think, or movies Blomkamp थे. or whatever his surname is. And he makes it very well. उनके production designs I'm a really huge fan of. अभी उनके एक film Yeah. भी निकला था Gran Turismo, but that's on another level. Okay. Yes. But Yes. but these kind of movies have been redone and again. And the thing is, like, what is the kind of presentation or the messaging that you kind of get into? Because obviously, one of the recent news was कि Joe Biden ने Dead Reckoning देखा, और उसके बाद this guy now wants to take strict, like stringent measures against AI. artificial intelligence. And Hmm. over here, what the movie is trying to show is basically even artificial intelligence might become might come at a point when they start developing feelings. So in that sense, should we depend upon them or should we not depend upon them? Because Hmm. in even in this film, it is also said that humans are the smarter species than AI, actually. Yeah. Because we were the ones who have caused destruction. We were the Yeah. ones who have caused a lot of this apocalypse which has happened, and we need Hmm. to, in order to do that also, we are destroying the AI thing. So Hmm. basically, our vision इवन and this आई एम सो entire सॉरी अभिनंदन, वो उसमें एक सीन में मेंशन भी करते कि वी वर द वन, लाइक नॉट ऑब्वियसली ह्यूमंस जैसे yeah, जो yeah, थे, good. लेकिन I'm वो जो वो बोलते कि लाइक वो खुद भी इंडिजिनियस पॉपुलेशन को उन्होंने ही वाइप आउट किया था, जैसे लाइक वी आर द वन yeah, हु वाज yeah. I don't सुपीरियर. want to use this word, but obviously they use it. They use this completely this words in the film as well. Yeah. But that is what makes it really interesting. Hmm. And obviously John David Washington का character भी है, उसका character design भी अच्छा किया है. Basically, I think there was something happened with his body, and therefore, like how these AI people come and help him in redesigning Hmm. his structure. Therefore, he can run, how he can do stuff. I mean, He's also even he has somewhat like a simulant only, no, because he's similar to reliant on he can technology develop to work and all that. so a protagonist who is handicapped and is going against a handicapped population. It makes it for a very interesting piece, and Hmm. therefore, I think there is a little bit of uniqueness, and that's his USP. And I Hmm. still feel that obviously it's made for an IMAX viewing, as Sanket said. Hmm. So yeah, my thing for Yeah. बट एक्चुअली viewing. काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट बनाया था जॉन डेविड वॉशिंगटन का, जो लाइक वो जो आर्टिफिशियल हाथ था, इट्स क्वाइट सिमिलर टू Exactly. अवतार 1 में जैसे आर्टिफिशियल लेग था, Yeah. लाइक सैम वर्थिंगटन के कैरेक्टर का. इट्स क्वाइट सिमिलर टू His दैट. leg. और वो लाइक वो जो सेल्फ रियलाइजेशन भी वैसे ही होता है कि आई एम फाइटिंग फॉर माय कंट्री, लेकिन फिर जाके वहां पे एहसास होता है कि लाइक they are the right people, and like my side is the wrong ones, and But now वैसा we रहता है. बट ईयर मैं एक चीज यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, द फ्लॉ फॉर मी ऐसा ऐसा मुझे लगा था कि आई डोंट, स्टार्टिंग में दे वर बिलीविंग अस कि एआई बहुत गलत है, एआई ऐसा है कि एआई बहुत गलत है, उन लोग सब ऐसा कर, लाइक दे आर मतलब एआई गलत है, XYZ वैसा कर रहे थे. और फिर आगे जाके दे आर टेलिंग दैट ओके एआई में भी फीलिंग्स आती है, ये सब आती है, बट व्हाट वाज योर कोर पॉइंट इन द फिल्म कि तुम्हारा एआई गलत है, तो तुम उस No, पॉइंट के ऊपर क्यों नहीं I'll चलते? no, वो ये I मैं mean, एड्रेस like करता हूँ थोड़ा. what I हाँ, really sure. wanted to put across was that अगर AI में अगर feelings भी आ जाती है और अगर उनका brains, जैसे यार even computer has their own brains, don't they? And basis what the data we try and give, they try and give us an analysis and stuff like that. So AI is everywhere. So the thing is basically these AI generated whatever this species are, whatever like they are being used in movies. So basically they are given a personality, and there might come a time when they develop a great personality even better than us. But obviously these kind of things only depends upon us, like how we treat them and how we take them forward, and ultimately it falls upon our shoulders only. So movie में जो अभी दिखाया गया है, in terms of like the protagonist needs a playing field, right? The protagonist needs to have a playing field, and because otherwise आपकी स्क्रिप्ट में basically you have a 2 hour 15 minute, it's a 2 hour 15 minute Yes, duration film, right? correct. Hmm. The screenplay needs to be too tight and definitely needs to have some really interesting moments. So Hmm. even if you see John David Washington opens up like being a double agent, and Yeah. ऐसा feel होता है is basically the AI which is attacking. But then you come to know that the humans have developed a device which is known as Nomad, and it's even Hmm. more superior to what the AI is Yeah.
come up with, and therefore they सर्वेलेंस हो गया essentially, like आजकल के जमाने में जो सर्वेलेंस सिस्टम्स हैं या जो भी है, I mean I exactly. So yeah. yeah, I yeah, think please ये go through. what Sanket said, Sanket, I think उसमें there is a line, I think there was a line where the simulant say कि जो LA में भी हुआ था वो एक error था, human error, not a machinic error. So I think it's on like in between the humans in saying what is better. I think it's very much taking the machines का side if they are हैंडल्ड प्रॉपरली एंड विथ केयर, विच अब आपको इसमें देखना है कि उन्होंने ईस्ट को चुना है उसके लिए और अमेरिकन आर द वंस हु एक्सप्लॉइट इट, तो आप उसमें देख लो कैसे होता है, बिकॉज आई थिंक इससे ज्यादा एंटी, आई डोंट नो ये प्रोपेगेंडा है या क्या है, Actually, बट I think जितना this is kind of a very propaganda film too. I think that's why people didn't लाइक maybe didn't इतनी accept एंटी the movie. अमेरिकन फिल्म मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी, बहुत टाइम पहले से नहीं देखी है, लाइक टू मी इट स्ट्रक बिकॉज एवरी Ah, अमेरिकन कैरेक्टर इन दिस इज does it's a some very, harm it's a very, to very unique everyone. perspective. Yeah, it's a Yeah. very unique perspective. So I'm like, And the अगर genius of आप the film too is it's yeah. not taking the side of the, what do you say, this the simulants. It is also not Hmm. trying to take the side of the humans. It's just this kind of a world that has now happened, and Hmm. people are just blaming each other, and Hmm. people are joining forces. People are joining sides. Hmm. Like John David Washington's wife was an orphan. She was Yeah. adopted. Her parents died. She was Hmm. brought up by similants. We don't know Hmm. what John David Washington's backstory is, but we know that he has been Hmm. acting in the force for quite some time, and that's his family kind of like thing. Hmm. But then obviously he comes across this weapon, and now he chooses if to destroy that weapon, that kid or daughter, or to be with her, and obviously like to decide. So basically, it's a very interesting human story. I Hmm. feel more than Yeah. what the AI machine is. AI is just acting as a, what do you see, as a reactor in the film, which I thought वही was आई pretty थिंक interesting. दिस इज वो ओल्ड स्कूल साइंस फिक्शन, लाइक जो भी आप Exactly, 70s 60s exactly. 50s में भी दे यूज साइंस एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट अस ओनली, लाइक दे ऑलवेज डू दैट, लाइक इट्स नॉट अ, I don't want to say that creator is doing it and like other films haven't. I think Yeah, it's yeah, been yeah, happening absolutely. since 50s only. But no, but I think there's lots of like interest. Whatever Abhinandan said about a lot of it, I think I agree with, like in terms of what all elements there are which are interesting. I thought the Even core the relationship was a funeral, little, yeah. Which one? Sorry. the funeral scene, like how people are being burned on fire, That's the and here the Indian. AI bodies are Yeah, being burned on fires, and yeah, yeah. there's a lot of, and these They guys are mixed, also no, like, it's called New Asia yeah, as the country. They call it New Asia, which I think they are trying to amalgamate a lot of cultures together, Indian mythologies, Eastern cultures. Indian mantras. A lot of the dialogue, some of the dialogues were in Hindi, and Hindi, obviously yeah, you have a creator that is known as Nirmata. And now yeah, in English, how you say Nirmata? It's Nirmata, like it's yeah. some नहीं sort of बट a name. उन लोग Yeah, वो लाइक उन लोग स्पेसिफाई भी करते कि इट्स नॉट इंडियन जैसा, लाइक वो उन लोग yeah, yeah. बोलते थे निर्माता इन नेपालीज नेपालीज, मीन्स तो वो अमेलगमेशन ही है ना सबका, करेक्ट नेपालीज कल्चर आ गया, हिंदुइज्म एंड इंडियन व्हाटएवर इवन इंडिया का आ टिबेटियन गया कल्चर सारा, फॉर वन I टिबेटन्स just देयर, टाइम वैसे yeah. I just remember John David Washington का बैक स्टोरी दिखाता है, उसके पेरेंट्स का भी कुछ दिखाता है. I just remembered. There is a flashback, like he's like the girl is explaining what happens to your parents, and he just says that they are off. Off is a word for like these guys are dead, and then Yeah. she asks like where these guys are. So they हाँ, say सो आई that they थिंक are वही रहता है कि उन लोग जब yeah, भी न्यूक्लियर वाला जो एलए में ब्लास्ट होता है तो तभी हम्म पूरा फैमिली ये मर exactly, जाता है, exactly. उसका भाई और उसकी लाइक जो आई थिंक भाई और बहन या जो भी रहते हैं, आई थिंक मॉम डैड भाई रहते सब मर जाते हैं वैसे. सो ही इज काइंड ऑफ द ओनली सर्वाइवर इन दिस वर्ल्ड वैसे. सो ही एक्सप्लेन्स इट एंड वहां पे जाके लाइक उन लोग बात करते हैं कि लाइक व्हाट इज हेवन और हेवन में कौन रहता है, लाइक Yeah. but he explains ke I Yeah. think good people, I think as and I'm not good or I'm It's not a like a people, you peaceful, are not it's good, like a I'm not peaceful good. abode Peaceful. in the sky. It's like a peaceful abode in the sky. And she asks him again. She asked like a very interesting question. So, are you going to heaven? Like, who goes to heaven? He said only good people. And then he says, so are you going to heaven? She said, no, I won't be able to go to heaven. John David Washington says, because obviously I'm not a good Good. person. I'm a really bad person. Hmm. And then the girl also says that I'm also a bad person. So Because you it's really created me or interesting. something I like mean, that. Yeah, so many similarities in terms of like how we
accept death. And there's also a very beautiful scene in towards I think when the build up of the climax starts happening. So there's this Hmm. temple, and this guy finally gets to see the Nirmata is in a Yes. very comatic state, and Mm-hmm. this very interesting scene. I really loved it. I mean, Yeah. she's neither alive, she's neither dead. She has been Yeah. kept in a vegetative state, Hmm. and it's upon the, and they couldn't do it because she's the creator, she's the Nirmata. But it Yeah. falls upon John David Washington to take the matter in his own hands and Mhm. like give her the peace that she wants. So Yeah. yeah, I think यही बात है कि basically it's it falls upon a human only to take up the, Yeah. Call. you see, Yeah. it's a very, it's a human story, like Yeah. like it is like giving us the it is giving us the key to understand like how we want to progress with the story and stuff. I think it's a very interesting Hmm. way of showcasing it. Yeah. 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 ध्रुव So आपने यस sorry. यस आप बोलो, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं you were saying बोलो आप पूछ रहे थे कुछ, मैं उसी को आंसर कर नहीं, मैं रहा वही पूछ रहा था। नो सो लाइक मैं पूछ रहा था कि जैसे मैंने थोड़े चीजें जो मुझे तभी देख रहा था तभी मुझे वर्कआउट नहीं कर रहे थे वैसे। सो आपको क्या चीज लगे थे which quite didn't work out didn't for work you? for me. Yes. I तो think this central relationship didn't work for me. I like जो father slash daughter relationship that should be there. I think that was not स्पेसिफिक इनफ। मुझे लगा था कि बहुत जेनेरिक वे में डायलॉग्स भी बोलते हैं ये लोग, लाइक इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि मैं ये लोग कैरेक्टर्स की तरह मेरे लिए एटलीस्ट स्टैंड आउट करे। एक्टर्स आई थिंक जो एल्फी का कैरेक्टर है, जो मैडलिन यूना वॉयल इज द गर्ल एसेंशियली द सिमुलेंट, उन्होंने प्ले किया है, आई थॉट शी वाज वेरी गुड। I thought I mean, I have not minded John David Washington before, but I thought यहाँ पे थोड़े also this might be कि वो ये हम लोग बात कर रहे थे कि ये इंडी और ब्लॉकबस्टर के बीच में टाइप की पिक्चर हो गई, राइट? सो देयर आर मोमेंट्स आई थिंक सेकंड या थर्ड चैप्टर में जब ये लोग भाग रहे होते हैं कहीं, और ये जो पिक्चर है थोड़ी सी, नॉट थोड़ी सी, काफी कॉमेडिक ट्राई करती है बनने के लिए, आई थिंक इन अ कपल ऑफ एक्शन सीन्स जब वो लोग Yeah. एस्केप कर रहे हैं, और जॉन डेविड वॉशिंगटन का कैरेक्टर पूरी तरह जो लाइक स्टार्टिंग में इतने सीरियस सॉम्बर जो हैं, वो जो फ्लिप करते हैं उस मोमेंट में, आई थॉट वो काफी अनकन्विंसिंग था। आई थिंक ये पिक्चर वैसी है जो अगर आपको लाइक अगेन ये हो सकता है ब्लॉकबस्टर के लिए आजकल चाहिए होता है कि थोड़ा कॉमेडी डाल दो ताकि लाइक इतनी सीरियस ना लगे, बिकॉज पिक्चर द मूवी इज वेरी सीरियस एंड द मूवी इज उसमें लाइक आई वाज थिंकिंग इसका डेथ काउंट करने कोई जाएगा तो इसमें तो कुछ ज्यादा ही होता है, क्योंकि bombs are dropping, people are shooting each other all the time essentially, right? एक और पिक्चर जो मुझे याद आई थी जिसके बारे में, वो चिल्ड्रन ऑफ मैन, अल्फोंसो कुआरॉन की, which I think is a masterpiece. Actually, But yeah, so I think ये सब ये और अपोकलिप्स नाउ भी, because वियतनाम, वियतकांग, whatever your grassy field, वो forestation, swamps. मतलब what do you think about, like, what didn't work out for you? You tell me. नहीं, यही चीज थी जब भी मुझे थोड़ा नहीं लगा कि लाइक अवतार में काफी क्लियर थी कि ही वाज सपोज्ड टू बी फाइटिंग फॉर हिज कंट्री, बट वहां जाके पता चला कि दे आर जस्ट डिगिंग फॉर द लाइक द मिनरल्स और वहां पे, एंड हिज पाथ वाज क्लियर कि अभी बस मेरा कंट्री है वो सही नहीं है और आई एम गोइंग टू बी जॉइनिंग दीज गाइज। यहाँ पे ओके ये आता है, लेकिन जाके पता चलता है कि लाइक कि एआई समथिंग अच्छा नहीं है वैसे, लाइक पहले उसको ऐसे लगता है, उसको विश्वास दिलाते हैं इन लोग, लेकिन फिर जाके ये साइड बदलता है। बट फिर मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा आई डोंट नो, लाइक ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं किया था कि इज एआई गुड और बैड, और I was kind of confused. So आप लोग दोनों से बात करके I was like थोड़ा clarity आ रहा है obviously ये फिल्म में, but yes ये है, ऐसा मुझे लगा था, and quite बोलते ना कि मेरे पास ऐसा प्रिंट था जहाँ पे मैंने थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखे थे विद डायरेक्टर गर्थ एडवर्ड्स। उन्होंने बात भी किया था कि इट्स काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय मेनी साइंस फिक्शन फिल्म्स व्हिच ही सॉ, और अपोकलिप्स नाउ भी एक ऐसा था कि लाइक कैसे वियतनाम में और वो सब थाईलैंड में वेरी लाइक वो तो आई डोंट थिंक ही इज हाइडिंग कि वो उसने अपोकलिप्स नाउ से इंस्पिरेशन ली है। इवन उसने जैसे जब भी उसने बात भी किया, लाइक सॉरी डायरेक्टर ने बात भी किया वहाँ पे कि
लाइक उसको उनको वहाँ पे शूट भी करना था, आई थिंक जहाँ जहाँ अपोकलिप्स नाउ की भी शूटिंग हुई थी थाईलैंड वगैरह में, लेकिन वहाँ पे हाँ शूट करना था, बट लेकिन परमिशन कोविड की वजह से बट वहाँ पे बट इन्होंने पूरी पिक्चर आई वाज रीडिंग दे शॉट अ लॉट ऑफ इट फर्स्ट इन रियल लोकेशंस एंड देन एडेड ऑल द all greens the whatever clothes. effect work which is why maybe it feels so real a lot of रियल times like एब्सोल्युटली, और वो location work मॉलडीव्स में उन लोग शूट कर रहे थे, एंड लाइक सम ग्रेट सीन्स, और इवन उन लोग उसने बोला था कि वहाँ पे दे वर लाइक ऐसा लग रहा था कि दे आर ट्राइंग टू शूट अ डेविड लीन काइंड ऑफ अ फिल्म, जो जैसे वहाँ पे एक वो जो वुडन ब्रिज का जो सीन रहता था yes तभी, yes yes इट yes वो क्वाइट bridge in the फेल्ट river लाइक, Kwai क्योंकि और वो खुद भी एक ब्रिटिश डायरेक्टर है, डेविड लीन इज आल्सो ब्रिटिश डायरेक्टर, वहाँ पे वैसा वो फीलिंग must be आ रही थी मुझे एब्सोल्युटली. mm-hmm. So yes, this kind of worked for me, or like and I'm also fan of those kind of science fiction films, जो Mm-hmm. थोड़ी like low budget भी रहती है. I'm all in for it. जो अगर अच्छी हो तो क्यों नहीं. मैंने हाई मैं लाइफ भी देखी है, मैं like हाई लाइफ तो सर कुछ और है ये कहाँ पहुंच नहीं, गया no, so it's still like वो science fiction as in just set in space kind of a thing वैसे, so oh Robert that is Pattinson, very abstract no वो तो Planet कहाँ एकदम Planet हाँ Pattinson. I think it's a very disgusting movie made, man. Honestly, it's a very disgusting movie. high life right I can Very understand but disgusting. I think Robert Pattinson can only pull up those. And hats off to him. He did a great job in that film, to be yeah honest. But I can't नहीं bear to stand it. That's not very graphic scenes, but some of yeah the scenes which I'm talking about, you guys do understand, and it's हाँ very जूलियट बिनॉश के disgusting to साथ watch. yes हाँ हाँ I'm I know talking what about you're talking about I'm talking about a lot of the scenes, but we'll हाँ discuss it for हाँ some. हाँ हाई वही मैं बोल रहा था हाई लाइफ तो सर कोई और ही वो लेवल पे है वो आई वो थिंक वो correct, like I know, but like high life in yeah, terms of science fiction, yes yes like जैसे बोल सकते हैं small scale in whatever small you're saying scale ना हाँ budget, correct, that's the reason. So वो वो I'll I'm actually I'm I'm kind recommend of a fan of that, like वैसे हम्म मैंने अगर मुझे अभी on top of the mind मैंने मुझे पता नहीं आ नहीं रहे थे, लेकिन it also quite felt like जब भी जो LA वाले सीन्स हो रहे थे, it हम्म quite felt like Wall-E as well at one point कि वहाँ पे the yeah, design some of them वहाँ पे yes yeah यस yeah एब्सोल्युटली, और वो yeah. वर्ल्ड बिल्डिंग, वो जो डिजाइनिंग था, प्रोडक्शन डिजाइन, इट क्वाइट mm-hmm. प्लेड इनटू देयर फेवर एज वेल yeah वैसे. yeah सो यस, आई एम श्योर कि इस साल लाइक अगले साल ऑस्कर mm-hmm. नॉमिनेशन मिल सकते हैं फॉर डायरेक्टर्स. आई डोंट थिंक डायरेक्टर, पर डायरेक्टर प्रोडक्शन, नहीं नहीं सर नहीं सॉरी, इतनी नहीं चली प्रोडक्शन डिजाइनर एंड also the cinematography Cinematography. as well, for cinematography इसलिए. Yeah, So it's quite good, cinematography, like from the cinematographer yeah. जो Dune sorry Greg Fraser, Greg Fraser, तुम्हारा favorite Batman. Batman का, correct. Batman The The Batman. Batman, Oh, actually, Dune. I also wanted to tell this. If you hmm look at some of the scenes, some of the scenes did remind me of Batman. I mean, when they're hmm working in a lab, and basically there's some, like some graphics on the walls and stuff like that. hmm And the best part is, अगर तुम लोगों ने देखा होगा उसमें कोई edit नहीं है. It's just a one take shot kind of a thing. The camera is just panning in, it's just you zooming can in. see stuff yes Yeah, which and is and you rarity get to nowadays cutting absorb नहीं है that. उतनी You get to absorb that scene. Your Batman maybe हाँ tha, and that's why it yeah worked really well. Yeah. hmm But what do you नहीं think about like something about the cinematography? Greg Fraser है यार, मतलब it's top notch, I should say. मुझे एक्चुअली अराइवल के फ्लैशबैक्स आए थे मेरे दिमाग में बिकॉज आई थिंक इट्स ग्रेग फ्रेजर ओनली हु शॉट No, no, अराइवल no. Arrival is Bradford Young. So Oh, no, it's was, Bradford Young, but okay. But वो yeah. whatever ड्यून बोल लो फिर ड्यून में जो थोड़ा आर्किटेक्चर जैसा करते आई मीन आई एम नॉट अ ड्यून फैन ऐसे बट लाइक आई सिनेमेटोग्राफी आई थिंक इज ग्रेट ऑफ दैट मूवी सो आई थिंक उसमें Eagerly जैसा waiting for Dune 2. मेरे को हाँ Dune 2 ड्यून देखना 2 है. वो तो मार्च में आ रही है ना अक्टूबर में हाँ आने वाला था. ये हाँ आई नो SAG-AFTRA strike होके इन्होंने बैंड बजा दिया. But I'm very happy now it's coming out in next October or something. I don't know. Maybe it's coming नेक्स्ट out in Feb. मार्च Next March में आ रही है. मार्च मार्च It's and I'm actually that also interestingly the when we are talking about Dune also that उसका भी background score Hans Zimmer ने दिया है, and this one also has been यस this music has been given to Hans Zimmer, and basically Hans Zimmer, a lot of people feel that he's like he's a little monotonous, I mean, he but I repeats his feel scores, that which is true. I think, but like वो चलता है अच्छा है स्कोर उसका. नहीं, but actually उसका mood booster बहुत अच्छा लगता है. I mean हाँ हाँ. even if you look at some of the recent films of Christopher Nolan, also in Tenet, Ludwig Göransson, Goransson, Goransson, I think, yeah. basically he like he was able to get the job done from Ludwig.
But the thing is, Mhm. when you listen to Hans Zimmer, it feels Mhm. like you don't listen to a soundtrack. It feels like it's just there as a character. It's Mhm. omnipresent there, Mhm. and or you also start enjoying the scenes with the music because there's a lot of use of piano in this film. In वो starting का piece is creating not Hans Zimmer, huh? Just saying. this one. The starting piece, the piano piece that comes in the credits is not Hans Zimmer. It's classical music they've taken from a soundtrack. I noted it down Okay, because I really liked it. It's by I didn't know Claude about it. वो Debussy. मैंने 2 दिन में Yeah, yeah, yeah. फिल्म खत्म किया. मेरे को नहीं नहीं इतना वही नहीं पता. साउंड है मैंने बोला ये हैंस जिमर का नहीं हो सकता पियानो कहाँ से आ गया उसकी लाइफ में Yeah, but a very interesting choice. I don't know what या it is, but it's नो 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 इट वाज really a गुड very इट वाज गुड interesting choice of, like using anachronistic music. I think this is more of a, like an anachronistic music. Like if some viewers don't know what it is basically when you use a music and it is not related to that particular timepiece. जैसे आप यश चोपड़ा के दिवाकर जो था Detective Byomkesh. If you look at the music, if you hear the music, there's a lot of jazz, there's a lot of modern electro or techno kind of music that goes on in the background. So that's kind of But it fits. anachronistic. I think it fits with the creator, na, because it is supposed to be at least जो New Asia इन्होंने दिखाया है that is supposed to be like a mixture of things, right? So score का mix and whatever you're saying kind of even makes sense उस context में. So I Yeah, think that absolutely. sort of makes Very sense. Yeah, complex point. yeah, But yeah. एक चीज थी अभिनंदन, what things like तुझे क्या वर्कआउट नहीं हुए in this film, like ऐसे कुछ फील हुआ था तुझे कि some things didn't work out as the Maybe, way. yeah, I mean, कभी I think the hairstyle of John David Washington, कभी braids पहन लेता है, कभी खुल के आ जाता है. I think it is not working for me. I think Yeah. they've shot this movie to and fro. Obviously, like he ties his hair, obviously वो खोल के आता है. But I think some of the makeup of John David Washington doesn't work for me. Secondly, I think the Chinese character which is there, जो Inception में भी था, who calls him brother. That's I think Yeah, ये काफी he veteran was an Inception. actor है, right? Yeah, that Ken is that. Watanabe. हाँ, Ken Yeah, Watanabe, Ken yes. Watanabe. Ken Watanabe. I think his character doesn't Yeah. work out that much. It's like, but Okay. maybe the script Haroon, is I think something he I plays. No, he like. comes later on in the film, right? Yeah. Yeah, he came first in Yeah. the film, then he disappears, and then he comes on in a very weird kind of a time, and then again he has some sort of a role, और उसका character turn off रहता है, turn on, turn off, turn on, turn off. फिर last में आके like he is like Yeah. taking a battalion. Yeah. Maybe his character doesn't work that much because obviously John David Washington needs to have some sort of a chemistry with the guy. I feel in the film, which doesn't work out Yeah. that well. So maybe these two films that stuck out, but other than that, I think I need to rewatch the film again just to figure out what is not working out. Otherwise, because watching this film in a one go, it feels absolutely like well paced and it's okay. It's not bad. Yeah. It's well paced. Yeah. अच्छा, I आपको one scene I really liked. Sorry, हाँ, one scene I no, no. really liked. I mean, what it builds, it goes from the temple, not temple, Yeah. temple only. I think you know when he turns Nirmata off, right? After Yeah. that, Alison Janney's character comes in, and the Yeah. fight that I really I don't know if it's a correct thing to say, but I really enjoyed the way her character died. Yeah, It's so because basically it's a very uh, it's basically it's like a very twisted sense of humor when she yes, knows that the girl is trying not to let her die, but then yes, again these guys come and shoot at her, and she's now trying yes, to stop people, and yeah, it yeah, says yeah, a yeah, lot in the film. It actually yeah, communicates a lot in the film. yeah, So yeah, yeah, yeah. I thought जो उसमें बहुत ही ironic death थी almost, and I was like that actually yeah, मैंने सोचा नहीं था कि वो वापस लाएंगे किसी तरीके से, but I thought that was quite well done. But बट yes, और भी अच्छी थी आप picture. लोग को ऐसा कुछ लगा एट वन पॉइंट कि ओके हु माइट बी द निर्माता, मतलब जब भी पता I guessed होने से on पहले, this क्योंकि too. मुझे ऐसा लग रहा था एक पॉइंट में, मुझे वो भी लग रहा था कि मे बी जॉन डेविड वॉशिंगटन ही काइंड ऑफ निर्माता, ऐसा Oh, कुछ ये तो लग टेनेट वाला ट्विस्ट हो रहा गया सर, ये नहीं चाहिए अपन को. बट यस आप लोग को ध्रुव यू गो. नहीं, I think I was largely पहले like I thought कि either of the two will be essentially उसकी wife या फिर लड़की, and उसी के बीच में I think दोनों में थे. Like for me it wasn't like a big mystery ऐसे. I was like कि निर्माता इन्हीं में से कोई होएगा. Like
जॉन डेविड वॉशिंगटन नहीं था वो बहुत अच्छी बात है, बट क्योंकि मुझे टेनेट नहीं देखनी फिर से और कहीं. You guys, you didn't like Tenet, Dhruv? You didn't like it, I I'm guess. not I'm a big Not Nolan because- fan. I didn't like Tenet, but yes. बट हाँ, अभिनंदन, लाइक तुझे ऐसा कुछ लगा था कोई एट सम पॉइंट कि व्हाट हु माइट बी द निर्माता ऐसा? Nee, yaar, actually, the thing is, see, I think it was a very generic piece, like how they were trying to show Nirmata. You know that there's a creator and they need to stop it. That's it. I felt there was nothing beyond that. Until and then, when they showed the twist, then I really got interested in the film. I think that Nirmata twist is something that really talks about like what the creator is also about. You know, like again, it depends upon the fate of the entire what do you say of the new Asia depends upon a human being only and not a Yeah. not a simulant, which I found was very interesting. And I think that these were the certain moments actually which I was really starting to like as I got to know more. But तुझे Sanket, you're saying this. निर्माता Now you've said this. You reminded me something similar-ish happens in Blade Runner 2049. Something हाँ similar-ish. the Ryan Gosling character. With the Ryan Gosling I, character. it's so cleverly done. Even in Dark, what do you say, Dark Knight Rises. I Dark really Knight love that Rises. film. Yes. No, With I like it, but with the identity of उसने क्या? Bane, Christian Bale. Okay. You get confused with the identity of the Bane, and then we got to know that it was not Tom Hardy's character, but it was actually Marion Cotillard's character. The That Marion Cotillard character. so I actually love that. So that is the thing. So I think I was pretty much used to it, and obviously I care about until a point of time when this guy goes and he gets to know it from his army colleague when he dies in front of him, and he says that Yes. don't know That about was the a nice intent moment. that this is Nirmata, and then you have to look at John David Washington's face at that point of time, and obviously yeah. So that was quite interesting. So thank you guys, thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस डिस्कशन में आने का. बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने मिला और बहुत सारे रिकमेंडेशंस मिले. डिस्ट्रिक्ट 9 जैसे फिल्म्स के, एक और मॉन्स्टर. डालूंगा मैं आपको जाने से पहले, क्योंकि आई गेस सबसे बहुत कम लोगों ने देखी होगी, एंड आई थिंक इट reminded me a lot. Midnight Special by Jeff Nichols. If people Oh, haven't I seen have seen it. I have seen it, but I feel Yeah. that अच्छा तू देख ले I bro. can उसके बाद हाँ, but हम discuss- मैं I want to recommend it based on the what I said कि इसमें emotion मेरे साथ नहीं click हुआ था. That is the emotional part which I clicked with Yeah. in that movie. Michael Shannon, no? Michael Shannon. Michael is there. Shannon, Kirsten Dunst, and And Kirsten Dunst and Joel this- Edgerton. Joel Edgerton also. Joel मिडनाइट Edgerton. कौन सी? No, not Special. Joel Edgerton or the Joel Edgerton. Yeah, Joel Edgerton, yeah. Midnight Special. But Yes, and बिल्कुल. Jeff Nichols की और फिल्में also उनको आती है अच्छी पिक्चरें बनानी. I think No, उनकी जेफ नई निकोल्स picture की मैंने एक देखी है, लविंग. It's a well made love story. Well made, It's very very Yeah. well made. I think it's available on Prime. Is it available on Prime? Loving? Yes, I guess. Midnight Special, yes, हाँ. Midnight Jeff Special है. Nichols. हाँ, Midnight Loving Special. नहीं है. Okay. लविंग का आइडिया नहीं है. लविंग भी you can rent मिल it जाएगी on कहीं ना कहीं online. हाँ, वैसे. So yes, thank you so much guys for the recommendations as well. Midnight Special जो मैंने खुद ने सुनी नहीं थी. I'm also going to watch that film as well. Thanks so much for joining, and we'll see कि और कौन से films के ऊपर कर सकते आप हैं. Oppenheimer तो देखो सर. Let's see, absolutely देखते हैं. इसलिए thank you so much guys. Good night. Thank you. Bye.